Children, let us continue with our lesson number 5, that is the Great Indian Desert. And we have discussed a few points earlier also about the desert location, desert region, climate and vegetation. Now moving ahead, our next topic is life in Great Indian Desert. So what about the life of the people that are living in these areas? Lifestyle refers to the way of living. What do you mean by lifestyle? Lifestyle means it is the way how the people living in that particular area are living. How they are living means what type of clothes are worn by them, what type of languages are spoken by them, what are the festivals that they used to celebrate, what are the different types of dance forms they used to do. All these come under this lifestyle. And what are the food items they preferably take, all these come under the lifestyle. Okay children, you will find that the people living in different regions have different lifestyles, isn't it children? पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज, जैसा जगह जहाँ की लोग मतलब लोग जहाँ रहते हैं उनकी एरिया के ऊपर डिपेंड करके दे विल फॉलो डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स, है ना. कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग की ईटिंग फूड हैबिट्स विल बी डिफरेंट व्हेन कंपेयर्ड टू द पीपल लिविंग इन दिस डेजर्ट एरियाज, एंड इट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन द माउंटेन एरिया. सो जो भी जहाँ रहते हैं उसके ऊपर उनकी लाइफ स्टाइल कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. लेट अस लर्न अबाउट द lifestyle of people living in the Great Indian Desert. So now today we are going to discuss about the lifestyle of the people who are living in the Great Indian Desert. Firstly, we are going to discuss about the clothes, what type of the clothes they are wearing. The people of the Great Indian Desert like to wear colorful clothes. So what the people here prefer is they like to wear colorful, बिल्कुल colorful, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं वो. The traditional clothes of the people, you already know what are traditional clothes, the clothes that are worn by a specific community, है ना, उसको हम traditional clothes बोलते हैं. So the traditional clothes of the people of the Great Indian Desert में people क्या traditional clothes use कर रहे, what they include. Now children, just turn your page. They include dhoti and kurta for men. What men used to wear? Men used to wear dhoti, kurta and a turban. Turban means ऊपर जो पगड़ी जो बांधते हैं वो. And घाघरा चोली and ओढ़नी for women. So what women used to wear is घाघरा चोली पहनते हैं और वो अपनी सर पे ओढ़नी भी लगाते हैं. So the traditional dress worn by the people living in the desert areas is, for men it is dhoti and kurta. धोती कुर्ता पहनेंगे along with a turban. And when it comes to women, what they used to prefer is they prefer घाघरा चोली and ओढ़नी. So these are the clothes worn by the people living in the desert area. So children, you can see a picture of men and women, a couple wearing traditional clothes at page number 31. Yes, just at the downside you can see the picture, what the couple wore in desert areas. Now the second topic, it is languages. What are the languages that are mostly spoken here? The main languages spoken by the people of the desert are, desert area mein people say mainly what are the languages that they speak are Rajasthani, Marwari and Hindi. So people used to speak in Rajasthani, Marwari and Hindi because most of the desert area is covered in state of the Rajasthan, and that's why. And कुछ borders है पंजाब, हरियाणा, गुजरात की, तो mostly Hindi also and even Marwari. These are the main three languages spoken by the people living in desert areas. Now moving to the festivals. The people of the desert celebrate all the major Indian festivals. Whatever the Indian festivals that we are celebrating, the people living in the desert area to celebrate these festivals. However, but the main festival celebrated here, but some festivals को वो लोग और ज़्यादा mainly celebrate करते हैं. What they are? These, you know, this Gangor
And desert festival, yes, desert festival is the main important festival for the people living here, and so many activities used to take place in this desert festival. आप कभी पुष्कर के एरिया में जाओ तो डेजर्ट फेस्टिवल्स में तरह तरह की एक्टिविटीज आप देख सकते हो. उधर कैमल फेयर ये सब भी अपन को देखने के लिए मिलता है. इज इट ओके चिल्ड्रन? सो द मेन फेस्टिवल्स व्हाट दे आर फॉलोइंग देयर आर Tees, Gangor and desert festival. See here we can see a beautiful picture of the here Rajasthani men participating in the Mr. Desert contest. See what the contest it is. जैसा Miss India, Mr. India ये सब contest होते हैं desert festival में. एक contest है that is the Mr. Desert. Who will become the Mr. Desert? See how they have decorated the camel, है ना, colorful उनके साथ camels को decorate किया. Even all the men were in their traditional attire. Their clothes are completely in that धोती कुर्ता turban ये सब रख के they used to take part in the desert festival. The desert festival is very important for the people living in this area. Now moving to the dances. Ghumar, Chari and Kachi Godi are the famous folk dances of the desert. So folk dance means we have already discussed about what is folk dance, classical dance, all these in our third class also. So folk dance means एक particular area में जो भी dance form people follow up करते हैं उसको हम folk dance बोलते हैं. In the same way the folk dances of the desert area are Ghumar, चारी एंड कच्ची गोड़ी. ये घूमर चारी ये सब क्या है, विमेन एक ग्रुप में पार्टिसिपेट करके ये डांस परफॉर्मेंस देते हैं. Now houses, which type of houses can you see in this area? The houses located in the desert have thick walls. So which type of walls we can see in the desert area? In the houses of the desert area we can see thick walls, बहुत मोटे मोटे दीवारों से बनता है. And flat roads, और roads कैसे हैं उधर, sorry flat roofs. What about the roof of the houses? हाउस की रूफ बिल्कुल फ्लैट बनाएंगे और उनकी walls will be more thick. The thick walls, why they used to construct the walls in a very thick shape? Because to keep the heat out, because in the desert area there will be in the daytime there is too much of heat. So in order to get rid of this heat, in order to prevent this heat from coming into the houses के अंदर heat आने से रोकने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत thick walls construct करते हैं while constructing their houses. So the houses have thick walls and flat roofs. These thick walls help to keep the heat out and so that the house remains cool. So that क्या है कि heat जब अंदर नहीं आएगा तो अंदर अच्छा से cool atmosphere वो feel कर सके. So this is all about the life in Great Indian Desert. Now moving to the next topic, that is occupation. What it is? Occupation means the work done by the people to earn a living. Everyone does one or other occupation to earn their living. मतलब उनको कुछ ना कुछ पैसा तो कमाना चाहिए ना उनको, जब अपना in order to live they want one or other money sources. So what the people used to do in this desert area? The people of the Great Indian Desert mainly rear cattle, camels and goats. So main occupation of the people here is rearing of cattle. So children, what is the meaning of rear? Underline the word rear with a pencil. Okay, so pencil से underline करिए. See here children, I am underlining each and every important things. In the same way you just do this. Okay, so what do you mean by rearing? क्या होता है? Bring up and take care. मतलब कोई भी animals की bring up करना, मतलब उनकी अपब्रिंगिंग कराना, उनकी टेक केयर करना. जब तक वो बड़े नहीं होंगे उनको अच्छा से केयर जो लेते हैं ना उसको हम बोलते हैं rearing. What they are rearing? Rearing cattle. What do you mean by cattle? Underline the word cattle too. Cattle means animals. किस तरह के एनिमल्स को वो ग्रो कराते हैं, जैसा कि काउस, बुल्स, ये सब क्यों? बिकॉज दे आर केप्ट फॉर मिल्क
in order to get milk, and for plowing fields also, fields को plow करने में भी काम आएंगे, and even to get milk also. So the type of the animal, the type of the cattle they are rearing here is camels, goats and buffaloes and all these. Okay, so one of the main important occupation of the people living in the desert area is rearing cattle, मतलब bringing up and taking care of the animals. Some people also grow crops, कुछ people तो उधर crops भी grow कराते हैं, because human settlements हम कहाँ देख सकते हैं desert area में, near oasis. So oasis क्या है, water areas in the desert. So उधर कुछ टाइप की क्रॉप्स भी ग्रो कराते हैं, कैसे, सच एज जोवर, मेज, बाजरा, ग्राउंड नट एंड सीसम. सो जोवर, मेज, बाजरा ये सब एक टाइप ऑफ ग्रेन्स है. बाजरे की रोटी, मेज मतलब कॉर्न की रोटी, ये सब खाते हैं ना आप, तो यही है जोवर, मेज, बाजरा. ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली जो होते हैं, एंड सीसम मीन्स तिली, जो ये इस टाइप की क्रॉप्स वो उधर ग्रो कराते हैं. देयर इज़ ऑल्सो ए सेक्शन ऑफ पीपल who live a nomadic life. So children, here we can see a section of people. What do you mean by section of people? Means a group of people who lives in a nomadic lives. Children, underline the word nomadic. Nomadic means, what is the meaning of nomadic? Nomadic means they are nomads, मतलब ये होते हैं the people who doesn't stay at a particular area for a long period of time. मतलब बहुत दिनों तक एक ही जगह में नहीं रहते हैं वो. They are wandering people. Wandering means they used to move from one place to another place. एक जगह से दूसरी जगह हमेशा वो अपनी सेटलमेंट को चेंज करते रहते हैं. सो ऐसी पीपल की लाइफस्टाइल को नोमैडिक लाइफस्टाइल बोलते हैं. सो इन द डेजर्ट्स वी कैन सी अ सेक्शन, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव ए नोमैडिक लाइफ. मतलब नोमैडिक लाइफ जीने वाले लोग को भी आप डेजर्ट एरिया में देख सकते हो. व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड. वाई दे यूज्ड टू चेंज देयर सेटलमेंट्स. अपने सेटलमेंट्स क्यों चेंज करते हैं वो? वाई can't they be there in a single place for long time? एक ही जगह ज़्यादा दिन के लिए क्यों नहीं रहते हैं? Because they used to move from one place to another place in search of water and food. अपनी जीवन के लिए उनको पानी और जो भी खाने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ मान लीजिए उधर की ओएसिस का वाटर प्रॉपर तरीके से उनको हो नहीं रही है, तो वो अपनी सेटलमेंट उधर छोड़ देते हैं, तुरंत उधर से दूसरी जगह चले जाते हैं. ऐसा करते हैं. इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोलते हैं बेटा? दे आर नोन एज नोमैड्स. सो दीज टाइप ऑफ पीपल आर कॉल्ड नोमैड्स और बंजारास. वन मोर नेम इज गिवन फॉर दीज टाइप ऑफ पीपल, दैट इज बंजारास. So children, underline this word nomads, and the other name of nomads is banjaras. मतलब ये कुछ नहीं है, ये लोग एक जगह में, they can't live in a single particular place for a long period of time. So the main occupation of the people living here is rearing of cattle, bringing up and taking care of animals until they are grown. This is the main occupation, and few people also grow crops if there is a good facility of water. Now, important places. What are the important places that we have to visit when you go to a desert area? Some of the important towns and cities located in the desert region are. So, what are the important towns and cities located here? Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer and Udaipur. So children, there are 5 important towns and cities. Repeat after me what they are. Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer and Udaipur. These are the places that you should visit during during your visit. Children, here we can see a fact. Did you know, है ना, the Indira Gandhi Canal has been built in Rajasthan to solve the problem of water shortage. We know that Rajasthan is a place where we can feel the scarcity of water. Water scarcity खूब है ऐसा राजस्थान में, जैसा हम साउथ की पीपल की उधर कोस्टल एरियाज खूब है. We can't face more scarcity of water, but here the people living in this area face more shortage of water. For this, in order to solve the problem of this, the government has constructed
constructed a canal. What it is, the name of the canal is Indira Gandhi Canal. It was built in Rajasthan. Where it was built? In Rajasthan, in order to solve the problem of water shortage की problem को sort out करने के लिए गवर्नमेंट ने इधर इंदिरा गांधी कैनाल भी का कंस्ट्रक्शन भी किया था. Okay children, now here there is a value corner also. Let us think about this also. Some people scribble over the walls of the forts or such historical places for fun when they visit them. Is it a good thing? Why? What can be done to stop such people? देखा आपने कभी विजिट किया हो तो जैसा हम फोर्ट, पैलेसेस, हवेलीज राजस्थान में जो भी, नॉट ओनली इन राजस्थान बट कभी कोई भी जगह की इंपॉर्टेंट प्लेसेस को विजिट करते हैं, अपन देखते हैं कुछ पीपल पूरा वो वॉल्स के ऊपर स्क्रिबलिंग कर लेते हैं, कुछ भी लिखते हैं. इज इट अ good thing to do children? Is it good? No. If for the next time if you are visiting any place and if you come across the people, you just warn them. Yes, it is not a good thing to do. वो सब अपनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, अपनी कंट्री का एक सिग्निफिकेंस बताते हैं वो. सो वी शुड नॉट डू लाइक दिस. सो थिंक अबाउट दिस वेदर इट इज़ अ गुड थिंग टू डू और नॉट एंड व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप सच पीपल. ऐसी लोगों को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए था. तो जो भी टूरिस्ट डिपार्टमेंट होते हैं वो लोग इसीलिए कुछ प्लेसेस के अंदर तक विजिट करने के लिए मना कर लेते हैं एंड नो एंट्री बोर्ड्स भी लगा देते हैं. ये सब करना बहुत ज़रूरी है, or else we may lose our significance of our country. Isn't it children? That is what about the value corner here. So we came to know about the important places that we should visit when we go to a desert area. Now children, turn your page and move on to the next. So here some of these places मतलब ऐसा बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड उदयपुर ऐसी जगह में जब आप जाते हो, we can come across huge हवेलीज. what they are? huge हवेलीज. एक बहुत बड़े बड़े हवेलीज को आप देख सकते हो. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूज चिल्ड्रन? ह्यूज मीन्स वेरी बिग, एनॉर्मस, बहुत बड़ा. हवेली मीन्स अ ट्रेडिशनल हाउसेस मेड बाय द किंग्स ऑफ राजपूत किंग्स. ये सब है ना, अपने ट्रेडिशनल वे में डेकोरेट करके अपने घरों को बनाए हैं. बहुत बड़े बड़े बंगलोज जैसा आप देख सकते हो हवेली को. सो स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट हवेली इज नथिंग बट अ ट्रेडिशनल होम बिल्ट अप बाय अ सेक्शन ऑफ पीपल. कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल से उनकी फैमिली की थ्रू वो बना हुआ है. सो आप बिग बिग हवेलीज देख सकते हो. फोर्ट्स, यस वी हैव अ वेरी फेमस फोर्ट इन आवर चित्तौड़ ऑल्सो, दैट इज द फोर्ट, Chittod Fort. And palaces, we can see so many types of palaces in Jaipur, Jodhpur. Jaipur ki palace very famous hai. Even the palace of Jodhpur, even the famous palace of the king of the Udaipur too, है ना. So we can come across these huge havelis, forts and palaces which were once the homes of the Rajput kings. So ये सब क्या है? These are all the homes of the Rajput kings. Rajput kings की घर ही है जो आज हम हवेली या फोर्ट या पैलेस जैसा जो हमको दिख रही है. सो ये हवेलीज वगैरह क्या, उनके ट्रेडिशनल हाउसेस है, उनकी ट्रेडिशनल ओन हाउस है जो बहुत अच्छा से डेकोरेट भी किया है. सो दे आर नथिंग बट देयर ट्रेडिशनल डेकोरेटेड रेसिडेंसेस. वी कैन कम अक्रॉस दीज रेसिडेंसेस लाइक हवेलीज, फोर्ट्स एंड पैलेसेस इन ऑल दीज प्लेसेस. The Great Indian Desert is a popular tourist destination. So what is this? The Great Indian Desert. So अपनी country की Great Indian Desert एक popular, very famous tourist destination. So children, what is the meaning of destination? Underline this word destination. Destination means the place where we want to reach, जहाँ हम जाना चाहते हैं. So जो भी लोग को अगर Great Indian Desert visit करना है तो it is a very popular destination for all the tourists to come and visit. Tourists from all over the world come to explore the desert region. मतलब पूरा, not only from India, so many tourists from all over the world. वर्ल्ड की भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं. Where? To the desert region. Why? To explore. What is the meaning of explore children? Explore means
एक्सप्लोरिंग मीन्स टू नो मोर अबाउट अ अननोन प्लेस, मतलब अपन कभी कहीं कोई जगह घूमने क्यों जाते हैं, देखने के लिए भी, और जो जगह हमने देखा नहीं उसके बारे में कुछ जानने के लिए, इन ऑर्डर टू नो समथिंग अबाउट द प्लेस दैट वी डिडंट विजिट. सो टूरिस्ट भी इसीलिए आते हैं डेजर्ट एरिया में, बिकॉज इट इज़ एन अननोन प्लेस एंड दे वांट टू नो मोर अबाउट द डेजर्ट रीजन. दैट्स व्हाई so many tourists, not only from India but from all over the world, come here to explore the desert region. And the last topic is camel, the ship of the desert. Yes, we are you know about this from your earlier classes itself. Is the name given to the camel is the ship of the desert. A camel is the ship of the desert as it is the main means of transport. Why we have given the name as it is the ship of the desert? Because it is the only and मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट. डेजर्ट एरिया में ऐसा सैंड ड्यून्स ये सब जहाँ फॉर्म होता है, उधर ट्रांसपोर्टेशन कितना मुश्किल होता है. इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. सो दैट्स वाई पीपल यूज टू ट्रैवल थ्रू कैमल्स. दैट्स वाई वी हैव गिवन द नेम दैट कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट. A camel's feet are long and padded. Children, underline the word padded. Camel का feet कैसा होते हैं, कभी देखा आपने? बहुत long, लंबे भी होते हैं, and they will have a padded type of feet. Means the meaning of padded is covered with a soft material. एक soft material से उनका feet cover हुआ होता है, so that they can bear the heat, है ना. जब desert region में sand की थ्रू travel करते हैं तो camel, that's why camel tolerate करता है वो heat को, because it has a padded feet which is made up of a soft material and makes it more comfortable to move in the sand. So what happens, these padded feet that enable it to walk easily on the sand. So ये padded feet की वजह से camels enable means to do something. What is the meaning of enable, children? To do something. So what camel is doing here, the padded feet will help the camel to walk easily on the sand. Sand पे बहुत easily walk करने में help करते हैं. A camel has a hump at the back. You could have heard about this also. Camel की back में एक बहुत बड़ा hump होता है. That helps it to go without food for many days. Because of this hump, camel का speciality, एक ये speciality है कि because of its hump, वो camel क्या एक साथ food खा के और पानी पी के भी अपनी hump में store कर सकते हैं. So because of this camels can travel for so many days without having any food, because वो अपनी hump में store किया, उसी को use करके it will get its energy. So this is all about the camel also. So children, we have completed our chapter and we can see a beautiful picture of camel caravan in the desert. देखो completely loose sand के ऊपर camels अच्छा से एक row form करते हुए कैसे जा रहे, isn't it? So this is all about our chapter lesson number 5. Children, after watching all the videos thoroughly, please kindly go through the chapter की go through होइए, underline all the difficult words and know their meaning. Okay children, now let us see the beyond borders. The Sahara Desert located in Africa is the largest desert in the world. अपने इंडिया में तो थार डेजर्ट है. So what is the largest desert in the world? Complete world में क्या है जो largest desert? That is the Sahara. What the name of the desert is? Sahara. Where it is located? मतलब where can we see this? Where it is? Location means where it is. कहाँ है ये? Africa. In the continent of Africa आपको ये सहारा डेजर्ट दिख सकती है. इज इट ओके चिल्ड्रन? सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर. थैंक यू.